नमस्कार. आयच्या गजालींनी आमी कांय वैजकी मळावयल्या खबरांतल्यान तांचे कडल्यान माहिती करून घेवपा खातीर आज आमचे बरोबर तज्ञ डॉक्टर आसात. डॉक्टर दिलीप चक्रवर्ती हे एक भारतांतले नामनेचे हिपॅटो पॅन्क्रिएटो बिलियरी सर्जन आणि तांचे क्षेत्र जे आसा ते बेंगलोरच्या HCG हॉस्पिटलात कार्यरत आसात. रिनाउंड हिपॅटो पॅन्क्रिएटो बिलियरी सर्जन फ्रॉम HCG हॉस्पिटल Bangalore is with us to give us a detailed insight and newer trends in management of liver cancer. A place like Goa, जहाँ तक का गोवा का सवाल है, we are known कि people say that अजीब है ये गोवा के लोग, maybe for different reason, but one of the thing is that we have socially accepted custom of alcohol consumption, whatever you call it, like एक छोटी सी दारू पीने की लफ्ज यहाँ के लोगों को है. Though they don't smoke much as compared to this thing, but and this has given rise to a lot of people with alcoholic liver disease. In fact, if you come to a place like Goa Medical College, we have quite a good number of people. I should not say good, or I should say bad number of people who are dying because of this illness. And perhaps there are two things. One is that they are not aware of the management. They are not bothered. Third thing is that ignorance. And fourth thing is that they don't accept, despite of knowing that these things, if you take care at the early stage, you can control it or you can conquer over it. Doctor, I would like to know, on behalf of Prudent Media in this channel, first of all, how you go about, means how you go about with this cancer of the hepatobiliary system, or which also includes pancreas in this, or how you define what are the cancers, what do you mean by cancerous cell and a normal cell? Means just start from the basic. Like. Basically, cancer affects an organ. That is an irreversible damage to the organ, that it can affect any system in the body. Basically, my specialty is to deal with the three organs: liver, pancreas and biliary system. Biliary system very closely associated with the liver, where the juice comes from the liver and goes into the intestine. So that is the biliary system. So cancer, any cancer affects, it depends on the survival. Every cancer is not completely curable. Every cancer after resection is हर चीज़ के लिए एक लाइफ पीरियड रहता है, डिपेंड्स ऑन द कैंसर है. तो आप लिवर कैंसर है जैसे स्टार्ट होता है लिवर, बिकॉज ऑफ एज यू सेड गाँव में ये ज़्यादा पीने के शौक है लोगों का. टूरिज्म जो 6 मंथ्स है लाइफ में, वो उस टाइम में ज़्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोशन करता है, तो इसलिए पीपल आर मोर यूज टू सम सॉर्ट ऑफ सोशल ड्रिंकिंग. इट्स नॉट ए लाइक इट्स नॉट नो स्टिग्मा और समथिंग लाइक दैट. बट व्हाट हैपेंस टू पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन वी स्टार्ट विद द लिवर, and the drinking mostly damages the liver. So it is not going to happen in कुछ 1 महीना 2 महीने में कभी नहीं होता. It takes many years. It may be 5 years, it may be 10 years, it may be 15 years. It depends on the person. And वो डैमेज भी कैसे होता है कि आपका एक पेशेंट, एक आदमी है जो दारू पी रहा है, तो उसमें पीने के लिए 5 साल में भी डैमेज हो सकता है. उसमें क्या है कि आप पी रहे हो, एट द सेम टाइम योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, आप अच्छा खाना खाते हो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आप एम्प्लॉयड है, अच्छा आप लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा है, तो उसमें आप थोड़ा ड्रिंकिंग करने से वो डैमेज रैपिडली नहीं होता. बट पीपल हु ड्रिंक सो मच एंड दे इग्नोर देयर न्यूट्रिशनल पार्ट, देन दोज लिवर गेट्स डैमेज वेरी फास्ट. So these patients after 5 years, 10 years, these people will develop, it's called so-called permanent damage to the liver cells. It's called hepatocytes. These liver becomes, normal liver is very soft, it becomes very hard, and the function of the liver becomes down. I see. At that time, these patients will develop jaundice. Then they develop ascites, there's fluid in the abdomen, and there's fluid in the legs. Yeah. And their cardiac functions, generally weakness, and all these complications will develop. It's what we call alcoholic cirrhosis. So number 1 cause of cirrhosis in India is due to alcohol drinking. So cirrhosis has many reasons, like a person can be affected by hepatitis virus, hepatitis B and hepatitis C. And hepatitis B is a virus and C are chronic hepatitis. It's not acute hepatitis. What we see is common jaundice. You see by outbreak of jaundice hepatitis. That is a orophycal route. That means by eating food or contaminated water, drinking water. That is hepatitis A. That hepatitis A will last for 1 or 2 months. And with proper nutritional support to the liver and some enzyme support to the liver, it is 99% is reversible. These patients will not go into complications like hepatitis A. Whereas another form of hepatitis, hepatitis E is there, which is more virulent than hepatitis A. Some of these patients will go into acute liver failure. Acute liver failure में completely patient unconscious हो जाता है. He has to get admitted to ICU.
उसमें लॉट ऑफ ऑप्शंस है। मोर्टालिटी उसमें जो डेथ होने का रिस्क है वेरी हाई है जब एक्यूट लिवर फेलियर होता है। जो आप हेपेटाइटिस ए एंड ई दोज आर न्यूट्रिशनली रिलेटेड, लाइक फूड कंटामिनेशन के वजह से होता है। दूसरा कैटेगरी है हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी में, सी में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसफ्यूज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन में, सेक्सुअल इंटरेक्शन विद हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन यू कैन गेट दैट वायरस। So this is more damaging to the liver than hepatitis A and E. Hepatitis A and E एक बार इन्फेक्ट होने के बाद hepatitis A and E रिवर्सिबल हो जाता है, आफ्टर दैट लिवर डैमेज इज नॉट परमानेंट। बट B एंड C आप इराडिकेशन नहीं होता, एक बार B C इफेक्ट हो गया आपका बॉडी में रहेगा, वो कंटिन्यूसली डैमेज करता है। इट्स लाइक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। एंड पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, और ई इधर वन ऑफ दीज आर पॉजिटिव, अलॉन्ग विद उसमें आप पीते और ड्रिंकिंग, इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग the possibility of the liver damage is very early and very fast. So इसमें important है कि cirrhosis जो develop होता है इंडिया में, number 1 cause alcoholic, followed by hepatitis B, and hepatitis C is also contributing to significant in North India, particularly North Indian belt है। These are the reasons for the cirrhosis. तो उसके बाद cancer is a different group। तो normal liver में liver cancer कम होता है। A liver cancer develops when already damaged liver by alcohol or by hepatitis B or hepatitis C। तो कैंसर डेवलप होता है ऑलरेडी डिजीज लिवर में, कैंसर डेवलप होने का चांसेस वेरी हाई। तो लिवर कैंसर है नॉर्मल डिजीज से, नॉर्मल लिवर से पैथोलॉजिकल लिवर जो ड्रिंकिंग की वजह से डैमेज हुआ, कि हेपेटाइटिस बी की वजह से डैमेज हुआ, सी की वजह से डैमेज हुआ, उनमें ज़्यादा होता है। अच्छा, so doctor, in what way, I don't say only in Goa but other places of the country also, we often have means they say like once they get jaundice, maybe whatever reason, like whether it is alcohol induced or anything or other toxin induced, people usually have a tendency of going for some Ayurvedic medicines. I'm not blaming that Yes. they are not up to the mark or something, neither I'm alleging that, but what we call in Goa like gouty medicine. Yes, They go yes. to some fellow, there is one doctors, house local quacks. who gives some medicine and they prefer this type of medicine. I would like to know from you whether this type of medicines have role and how, up to what extent, and how seriously should we look up to the jaundice, because this may be the early signs that you are heading towards cancer in a later stage. So how you go about it? एक्चुअली जॉन्डिस जब पेशेंट को होता है तो जॉन्डिस दो तरह का होता है, एक मेडिकल जॉन्डिस है, एक सर्जिकल जॉन्डिस है। सर्जिकल जॉन्डिस जो होता है स्टोन की वजह से होता है, गॉल ब्लैडर से स्टोन में, सीबीडी स्टोन है, कॉमन बाइल डक्ट है, उसमें स्टोन है। जो सर्जिकल जॉन्डिस में आप वो मेडिसिन लेके, दवाई लेके खाने होने का नहीं है। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट है, सर्जरी करना है, वो स्टोन निकालना है, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो वो निकालना है। वो मेजॉरिटी कैटेगरी, एक कैटेगरी मेडिकल जॉन्डिस है जो आप बोल रहे हैं, दवाई लोकल ट्रीटमेंट जो देते हैं। एक नॉर्मल पब्लिक के लिए वो जॉन्डिस मेडिकल सर्जिकल मालूम नहीं है। जो जॉन्डिस है मतलब वो जाते हैं, जो पड़ोसन जो कोई एडवाइस दे दिया तो वो जाते हैं। तो मेडिकल जॉन्डिस है, एज आई सेड अर्लियर, इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस है। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस सी है। एज ऑफ नाउ कॉमनली वी नो 5 टाइप्स ऑफ वायरसेस सर। उसमें GH एंड वो भी है, विच नॉट कॉमन, विच इज एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल लैब पार्ट मोर ऑफ इट। तो इंडिया में जितना हमें A to E तक है उसमें न्यूट्रिशनल रिलेटेड लाइक फूड वाटर कंटामिनेशन से होता है A एंड E। ये दोनों जब होता है, ए का एक एक इंडिविजुअलाइज, इफ आई स्टार्ट विथ A, हेपेटाइटिस A, इट इज न्यूट्रिशनल रिलेटेड। आपको क्या है कि एक बार जॉन्डिस होता है, फर्स्ट 2 वीक्स 3rd वीक तक बढ़ता रहेगा। पेशेंट को बेसिकली उनका रेस्ट चाहिए, फिजिकली रेस्ट चाहिए, उसका विटामिन सपोर्ट चाहिए, लिवर एंजाइम सपोर्ट चाहिए, बेसिकली रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज ड्रिंक्स। उसमें आपको 99% पेशेंट हील हो जाता है 2nd मंथ में, मतलब 6 वीक तक बाद डाउनफॉल मतलब इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है, वो वायरस का विरुलेंस कम हो जाता है। तो आपको जो भी हेपेटाइटिस है, आप गाउटी के पास जाओ, इधर जाओ, कहीं पे जाओ, आप बिल्कुल मेडिसिन बिना लेके घर में बैठ के ग्लूकोज ड्रिंक्स पियो, तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। करेक्ट, only the credit goes to the person whoever has treated Yes. thinking that is तो वो कैटेगरी है, एंड उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस वेरी वेरी लेस है। yeah, so because it is self limiting, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, वो बॉडी इटसेल्फ है। पेशेंट को रेस्ट देंगे, आप रेस्ट देके न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे, प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज ड्रिंक्स देंगे, बिकॉज लिवर का मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी तक है, प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज देना पड़ेगा। उसके बाद विथ रेस्ट इट विल सब्सिट्यूट जोन। 4 वीक्स के बाद इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है। 9 वीक्स का एक फेज होता है जब जॉन्डिस बढ़ के जाएगा, फिर 2nd फेज में कम होके जाएगा। दिस इज हेपेटाइटिस ए। उसके बाद ई होता है सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, बट ई में क्या है कि कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ई में पेशेंट है, एक्यूट लिवर फेलियर होता है पेशेंट को। एक्यूट लिवर फेलियर में आपको पेशेंट सडनली कोमा में चले, जॉन्डिस बढ़ के 20-30 होके सडनली पेशेंट कोमा में चला जाए। इस टाइप ऑफ पेशेंट्स को बहुत सीरियस है,
कॉम्प्लिकेशन रेट ही है, डेथ भी बहुत हो सकता है। मेजॉरिटी एक बार एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, उनका आपको प्रॉपर लिवर आईसीयू नहीं रहेगा तो डेथ होने का चांसेस संभावना ज़्यादा है। ओके, उसके बाद बी एंड सी में एक बार बी में एक्यूट लिवर फेलियर हुआ, सी में लिवर फेलियर हुआ, डेथ रिस्क वेरी हाई है। तो दिस व्हाट लोकल ट्रीटमेंट इज टू सम एक्सटेंट पीपल आर यूजिंग इट, not everybody. Now the awareness has improved a lot. Still in some patients what happened, we had a patient from North India who was working in Bangalore. He had hepatitis A. He went to a local quack, somebody gives treatment for the Ayurvedic and all, some so called he treats hepatitis. He taken, because hepatitis B usually never goes into acute liver failure. That patient has taken medicine, after 7 days into liver failure. He was in the ICU for about 15 days. He was prepared for lung transplantation and all, but before everything could happen, he died of complications. So what drugs they are giving, we don't know. And is there no recommendation that we are giving so and so drugs? Nobody knows. Every quack his own formula and own. Yeah, they have their own formulas. Unless it comes out something like I am giving this drug experimentally proved. हमारा एलोपैथिक में क्या है कि every drug is experimented and it tried in the animals, then it comes to human beings. उनका जो drugs, it is not really, they are not qualified people also who are giving these medicines. Neither qualified people, neither there is quantitative estimation like what should be the standard dose, and there is no uniformity at different. Everybody gives as per his. So it is really dangerous to take such drugs when the liver is concerned, because once the liver goes into liver failure, it is very, very difficult. The patient may land up in liver transplantation also. Achha. So basically what I feel that as what I gather from our discussion is that basically in case of any jaundice, they should go to a preferably allopathic doctor and get properly evaluation done of the investigation, so that you will come to know whether it is because of obstructive jaundice or medical jaundice. Because as you have rightly said, that medical jaundice in course of time, if it is mostly it will come out and patient may feel better. But if it is surgical, you will definitely require some active management. Otherwise, there is a high chances that he may go into failure and complications can occur. Doctor, let's take a small break and then we'll start with our discussion.